press conference for Lok Andolan from the Lok Andolan organization. This organization is working under the guidance of Shri Anna Hazare ji and present working president is Shri Kalpana Inamdar ji. This organization is works for Andolan for the social protection of civil rights of all the citizens of India. The Lok Andolan Nyas organization launching a campaign which is named as Lok Tantrik Nyay Abhiyan. Today we are called this press conference only to inform the Telangana peoples and citizens of India that we are launching a campaign named as Lok Tantrik Nyay Abhiyan, which is going to be held on 31st at Indira Park Dharna Chowk. And now I am giving the mic to the working president who will address all the issues in respect of. नमस्ते, कल्पना इनामदार। हम लोग एक तेलंगाना से कैंपेन चालू करना चाहते हैं। जो आज केंद्र सरकार जो सेंसस कर रही है, पूरे देश में सेंसस चल रहा है, लेकिन सेंसस के माध्यम से सबको कास्ट पूछी जा रही है, लेकिन कास्ट पूछी जा रही है, कास्ट लिखते भी है, लेकिन कैटेगरी ओबीसी का मेंशन नहीं कर रहे। अगर कैटेगरी ओबीसी का मेंशन नहीं कर रहे तो केंद्र सरकार को ओबीसी का डेटा कितना है ये कैसे पता चलेगा? ये पता ही नहीं चलेगा। आप ओबीसी का फॉर्म भी देखें, सेंसस का फॉर्म देखेंगे, उसमें कैटेगरी मेंशन किया नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर विचार करके ओबीसी के लिए कैटेगरी मेंशन करे फॉर्म में। ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग जो वुमेन रिजर्वेशन है, जो वुमेन रिजर्वेशन 33% है, वो 33% में सब कोटा किया जाए। जैसे कि हम ये बोल रहे हैं, अगर यदि ओबीसी का सटीक जनसंख्या नहीं गिनी जाएगी तो ओबीसी समाज को जनसंख्या के अनुपात में सामाजिक न्याय कैसे मिल सकता है? अगर ओबीसी की कैटेगरी मेंशन होती है तो ओबीसी के कैटेगरी के अनुपात वुमेन रिजर्वेशन में महिलाओं के लिए सब कोटा मिलना चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग, सरकार डिलिमिटेशन बिल के लिए वुमेन रिजर्वेशन तो जोड़ रही है। जैसे कि डिलिमिटेशन बिल जो है वो डिलिमिटेशन में आज जनसंख्या के आधारित प्रतिनिधित्व मतलब हर राज्यों को मिलेगा। तो हर राज्यों को मिलने के लिए किसी राज्य ने लोक संख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया है और किसी राज्य ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, जो साउथ के राज्य है, जैसे तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ऐसे बहुत सारे राज्य ने जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। तो अगर डिलिमिटेशन बिल केंद्र सरकार लेके आती है तो डिलिमिटेशन बिल होने के बाद अगर लोक संख्या के अनुपात हर एक राज्य में कितने प्रतिनिधित्व जाएगी लोकसभा में बैठने के लिए, तो किसी राज्य की प्रतिनिधित्व संख्या कम हो सकती है या ज्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार इसके बारे में कुछ बोल नहीं रही है। तो हम एक केंद्र सरकार को एक ऐसी मांग कर रहे हैं, जो आप डिलिमिटेशन जो बिल लेके आ रहे हैं, तो जिस राज्य की जितनी भागीदारी है उतनी ही भागीदारी उस राज्य को मिलनी चाहिए, उसकी भागीदारी कम नहीं होनी चाहिए। ये हम तीन मांगों के मैंने जो बोले हैं ये तीन मांगे, इसके लिए एक हम कैंपेन चला रहे हैं। जो चौथी मांग है, जो हाई कोर्ट की वकील है जो पवार, शिल्पा पवार, वो चौथे मांग के बारे में बात करेगी, फिर मैं बाद में वापस बात करती हूँ। Access to justice. By way of this campaign, we are requesting the central government to consider the lawyers who are working on the social geographical backgrounds, because sometimes what happened, the persons who are working in a village as a lawyer can not getting opportunity to appear in the high court because the limitation of the regional language. So we are requesting the central government to consider to represent them in their regional language in the high court, so can everybody can able to appear in the high court. As well as we are requesting to consider for
examination for high court, appointment of high court judges, because in the if we see the collegium system is there in the high court as an high court judges or district judges, and therefore we are requesting the examination which is conducted for district judges, same time of examination has to be held for high court judges, so every person from wherever he is, he can able to get the opportunity to appear for the examination and able to be a high court judge. That is our request from the central government. इनामदार गारू लोक आंदोलन समितिకి లీడ్ చేస్తున్నారు ప్రెసిడెంట్ అండర్ శ్రీ అన్నా హజారే గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన గైడెన్స్ ప్రకారం షీ వాజ్ అన్నా హజారే టీంలో రైట్ వింగ్లో ఉండే ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే లోక ఆందోళన నుంచి ఒక మెయిన్ ఏవైతే ఉన్నాయో 3-4 ఇష్యూల మీద ఈమె ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ అన్షన్ వచ్చేసి స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ ముద్ద ఒకటి వచ్చేసి ఓబీసీ డేటా ఏదైతే ఉందో సెన్సస్లో ఓబీసీ డేటాని దాని మీద, అండ్ రెండోది వచ్చేసి ఉమెన్ రిజర్వేషన్స్ 33% ఏదైతే ఉందో దానిలో కూడా ఓబీసీ కేటగిరీని ఈ సెన్సస్ ప్రకారమే ఆ ఒక విషయం ఒకటి, అండ్ డీలిమిటేషన్ ఇష్యూ అండ్ మెయిన్ ముద్ద వచ్చేసి ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ ఏదైతే మన రూరల్ ఏరియాలో చిన్న లాయర్లు ఉంటారో, అడ్వకేట్స్ ఉంటారో, లేకపోతే జడ్జెస్ ఉంటారో వాళ్ళని హైకోర్టులో తీసుకొచ్చి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ని కూడా హైకోర్టులో ఎలో చేయాలి, అండ్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న రూరల్లో ఉన్న చిన్న అడ్వకేట్స్ని హైకోర్టులోకి ఎలో చేయాలనేది జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ మీద ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా धरना पे बैठ के लोगों को जागृत करेंगे और मेरा ये सबको ये कहना है कि ये जो हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, इस कैंपेन के लिए हम देश के लोकतंत्र समर्थक नागरिकों को, सामाजिक न्याय के समर्थकों को, राजनीतिक नेताओं और सभी राजनीतिक दलों से इस शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक जन जागरण आंदोलन को नैतिक एवं लोकतांत्रिक समर्थन देने का आह्वान करते हैं। हम इस धरना के लिए हम जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि ये जो इशू है ये सबकी इशू है, इसीलिए ये इशू के लिए सब लोगों ने आगे आना चाहिए। इसमें राजनीतिक दल भी छूटने नहीं चाहिए। उन्होंने भी हमें इस धरना के लिए हमें समर्थन देना है, तो हम इस बात के लिए यही वापस एक बार तेलुगु में बात करेंगे सर। అండ్ సేమ్ పాయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్కి ఒక ఆలోచన చేసే పొలిటికల్ పార్టీస్ కావచ్చు, మేధావులు కావచ్చు, ప్రొఫెసర్స్ కావచ్చు, మన తెలంగాణ సమాజం నుంచి అందరికీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం, ఆహ్వానిస్తున్నాం మేడం తరపు నుంచి. అండ్ ఈ మెయిన్ ముద్దాస్కి సపోర్ట్ చేసి ఎక్కువ మంది జనజాగృతి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. More literate people are residing in the Hyderabad, so they can consider our issues and help us to take these issues on the pan level in India. We are after this Hyderabad campaign, we are initiating this campaign in other states also, but we are starting from Hyderabad, Telangana state. जो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, स्पेशल सेशन लगा के कभी भी आ सकता है और डिलिमिटेशन का संबंध खाली केवल नेताओं और किसी पक्ष से नहीं आता है। जिस राज्य की लोक संख्या है, अभी मैं एग्जांपल एक बात बताती हूँ, अगर आप ये कहेंगे कि जैसे कि यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, अगर उस राज्य में अगर लोक प्रतिनिधि मतलब जनसंख्या के आधार पर अगर सीट बांटे जाएंगे तो किसी भी राज्य के सीट कम हो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी आज हर राज्य में जिसका जितना शेयर उतनी उसकी भागीदारी, आज आपका जितना शेयर है उतनी ही उसकी भागीदारी डिलिमिटेशन में होनी चाहिए। उसके लिए कुछ अलग से केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों को एक साथ करके स्पेशल सेशन लगा के उस पर चर्चा होनी चाहिए। बातचीत नहीं होगी तो आप डिलिमिटेशन आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि डिलिमिटेशन से खाली राजनेताओं का नुकसान नहीं होगा, उस राज्य के जनता का भी नुकसान होगा, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी। पॉलिटिकल पावर ये बैलेंस होनी चाहिए सभी राज्यों के लिए। तो हमारा यही मांग है केंद्र सरकार से कि डिलिमिटेशन बिल आने के पहले सभी राजनीतिक दल है, जितने भी राज्य है, उनके साथ बात किया जाए
और उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, संविधान में कैसे बदल कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, इस पर जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक डिलिमिटेशन बिल नहीं आना चाहिए, ये हमारी मांग है। अब तमिल में तेलुगु हम अगस्त 31 को इंदिरा पार्क धरना चौक हैदराबाद, यहाँ हम लोग एक कैंपेन चालू कर रहे हैं और इस कैंपेन में हमने 4 मुद्दे लिए। जो हमने एक सेंसस के बारे में जो बोला, जो सेंसस तो सरकार कर रही है लेकिन उसमें ओबीसी की कैटेगरी काउंट नहीं कर रही है, उसमें कैटेगरी के लिए उन्होंने कॉलम रखा नहीं है। जो केंद्र सरकार उसमें कैटेगरी का कॉलम रखे ओबीसी के लिए, अगर कॉलम रखेंगे तभी पता चलेगा कि ओबीसी जनसंख्या कितनी है। अगर ओबीसी की भागीदारी अगर काउंट करना है तो भागीदारी काउंट करने के लिए अगर कैटेगरी नहीं रहेगी तो काउंट नहीं कर सकते। आज के तारीख में केंद्र सरकार सब फॉर्म तो भरा रही है, सबको कास्ट पूछ रही है, लेकिन कास्ट से के अनुपात से आप ओबीसी की जनसंख्या आप काउंट नहीं कर सकेंगे। अगर ओबीसी की संख्या काउंट करना है तो उनको कैटेगरी वहाँ पे डालना होगा फॉर्म में। ये नंबर 1 हमारी मांग है। दूसरी मांग ये है कि 33 रिजर्वेशन जो वुमन का है तो उस रिजर्वेशन में ओबीसी के लिए एक सब कोटा होना चाहिए महिलाओं के लिए, वो दूसरी मांग है। और हमारी जो तीसरी मांग है, इतने समय केंद्र सरकार ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं, उन लोगों से बात करनी चाहिए। नहीं, अगर वो लोग बात करेंगे तो उस राज्य के ऊपर अन्याय हो सकता है, क्योंकि डिलिमिटेशन डायरेक्ट पॉलिटिकली कनेक्ट नहीं है, उस राज्य के जितने भी नागरिक है उनके लिए कनेक्ट है। क्योंकि पॉलिटिकली पावर अगर कम हो जाती है तो वो लोकसभा में अपना आवाज़ अच्छे तरह से नहीं उठा सकते। तो मेरी तीसरी मांग ये है कि जिस राज्य की जितनी भागीदारी अभी है जो लोकसभा में, उतनी ही भागीदारी कायम होनी चाहिए। ये मेरी तीसरी मांग है। चौथी मांग हाई कोर्ट के जो अगर केंद्र सरकार डिलिमिटेशन बिल बिना पूछे अगर लेके आती है तो उस राज्य के ऊपर अन्याय हो जाएगा। Every state wise or district wise advocates can able to appear in the high court, so the regional language has to be considered as a required language in the high court. This is our fourth demand in this here. So every person who is practicing in the district as well as village level can able to appear in the high court and use their regional language. And examination has to be conducted for high court judges also. The collegium system has to be dropped out, so everyone, whether he has the background of legal fraternity or not, he can able to appear in the examination and get a chance to be an advocate of as a judge of high court. నమస్కారం. లోక్ ఆందోళన్ సంస్థ నుంచి మేడం కల్పన ఇనామ్దార్ మేడం అన్నా హజారే ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఉద్యమం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మెయిన్ 4 ఇష్యూస్ మీద. ఒక ఇష్యూ వచ్చేసి డీలిమిటేషన్ ఇష్యూస్ మీద, అండ్ రెండో ఇష్యూ వచ్చేసి ఉమెన్ రిజర్వేషన్స్ ఇష్యూ మీద, అండ్ 3 జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ అండ్ సెన్సస్ ఇష్యూస్. 31 ఆగస్ట్ మన ఇందిరా పార్క్ నుంచి ఉద్యమం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో తెలుగు ప్రజలందరికీ, తెలంగాణ ప్రజలందరికీ వినతి ఏంటంటే, ఎవరైతే మేధావులు ఉన్నారో, లేకపోతే అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే ప్రొఫెసర్స్ కావచ్చు, మేధావులు కావచ్చు, ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు, కంపెనీస్ కావచ్చు, అందరికీ, జనప్రతినిధులందరికీ ఆహ్వానం చేస్తున్నాము. ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొనండి. అందరూ సమానంగా, అన్ని రాజ్యాలకి సమానంగా న్యాయం జరగాలని చెప్పి ఈ పోరాటంలో అందరూ పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాం లోక్ ఆందోళన నుంచి.